All right. Good evening, everyone. So आज मेजर हम ये देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने वायरफ्रेम भेजी है. दे आर गुड, पहले से काफी अच्छी है. ठीक है. So to start with, what we will do is one by one I'll ask again everyone to share their wireframes. मैंने रन इश्यूज पे कमेंट नहीं दी है, so that we all know कि client की feedbacks कैसे आएंगे. ठीक है. So I want you all to understand how to deal with clients. ठीक है. So let's start with जिगर पटेल. सबसे पहले आपकी जो बजटिंग एंड फाइनेंस वाली जो वायरफ्रेम है, शेयर दैट. जिगर पटेल. Yeah, I'm audible. Yes, you are. Okay. So present the wireframe in a way that you are presenting it to your client. Okay. So this is how our dashboard will look like when we log in for the first time. So, Jigar, where is the login screen? I mean, I assume that when the user logs in for the first time, there will be the splash screen, the login screen, correct? I'm also not sure, like it is there inside over here, but I guess I have not did connectivity for this button to prototype. No problem. You can take me through from here on. It's okay. Oh, this is a splash screen. How it look like? There will be a company logo and all those things. Yes. Yeah. We'll click on next and last for sign up, login or Facebook. After that, this is how our dashboard will look like. Okay, Now so maybe are we not giving the option to log in with email? yeah, Google or a Facebook. No, are we not giving the option to the users to sign up with the email password, which is, the normal way of doing it? Yes, I guess we should. It should be have with given. And why is that? Like if they don't have, like they are using some another domain email ID as the primary email, then in that case Google or Facebook will not work. That's why. No, so my question is that why are we not giving the option to sign up with email? Actually, I have not like this was created in our first lecture, so I have not touched this back, and I did not refer to it again. I started from there only. So, Jigar, I am talking to you like a client. There is no lecture or anything right now. Okay. So you'll have to answer me as to why there is no email option. Okay. So I missed to add that. I will update it and get back to you. So now, everyone, please answer soon. Take note of this. In the very first lecture, when we started with the wireframe, correct? We came up to this solution that we don't need email and password for multiple reasons. किसी को याद है क्या reason है वो? Anyone? Anyone? किसी को भी याद है तो हैंड रेज करो. No one? ठीक है, no problem. So the reason हमने वहाँ पे login with email नहीं दिया था, क्योंकि अगर हम वो करेंगे, ठीक है, so we will have to give a separate flow for sign up. We'll have to give a separate flow for login. Secondly, everyone nowadays uses
log in with Google and Facebook 99%. क्योंकि पासवर्ड याद रखना अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। अगर हम वो देते हैं तो वी आल्सो हैव टू ऐड द फील्ड्स फॉर फॉरगेट पासवर्ड. So to avoid that hassle, we are only giving the option of logging with Google and Facebook. This should be the answer. If someone asks you कि इसमें login या sign up क्यों नहीं? Is it clear, everyone? Yes. Okay, yeah, please move ahead. So this is how our first thing will look like after we log in. So it will, because we did Google login, so we will not be having all the basic details, and it will ask him to first complete the profile. So we will enter all the details, the first and last name. I guess this is not needed because we can get this information from Google also, I believe. Okay. And we can just prefix, like populate the name which Google has given and show it over here. But where's the email ID that will be fetched from Gmail? You need a field of email ID, right? Yes, that is also. So take a note of that. Add comments in Figma. This I can add. Yes. Prototype. Yes. Where is the this? Yes. Pre-populated name. So, user ID or Facebook ID. Okay. Okay. So Then whenever we you talk to clients, keep your notes or this Figma comments handy so that you can quickly collaborate with the client, and you also have a note of all the comments that the client is making. Okay. Then I guess the close prototype is moved out. Comment here also. So if it is a profile screen, there is no apply or close. It's not a filter, right? So it should be update. Okay. Update or back button, right? Yes, the close button is not required. Okay. So as a UX designer, these are the basic things that you have to remember. Just click on send button. And this one, right? Not Hit enter. Then we can go back from here also, but it will go to the profile page. Go back to the dashboard. Okay. So what is this add goal, add set budget, and add transaction? So this simply is a budget and a goal tracking app. So and we will log in for the first time. This all are empty. So this is the basic thing that will show pop up on the first screen, so that you can put an entry over here. So when I click on add goal, it will directly enter the amount. So what is a goal and what is a budget? What's the difference there? So goal is user's goal, that what they want to achieve. So since they are using this budget and expense tracking app, Exactly. the main motivation of this app is to show the user that they like to ask him to save the money, not ask him. But with this app, they can track their expenses and they can save money and achieve their goals. Like they want to buy a car in some predefined time, or they want to go for some vacation abroad or somewhere else. So that is, these are some of the example of goals. And budget? So budget is the monthly expense, like monthly. So as for example, in case of housewife, they if they are not earning or somehow like, or if they are earning, so they have some predefined amount that their husband or their different spouse have given them to them, or if it is some other
like the shopkeeper, though he might have specific X amount that is given to him for the expenses throughout the month. So this is the budget. Like example, 25,000. Like for example, I give my mom 25,000 every month, and so that he can do all the expenses and for the household thing. Okay, okay. And what is that transaction? Right transaction is if they are like once the goal and budget are set, or if it's not set. Like add transaction means whatever expenses they are doing, they can put an entry via add transaction. So add transaction and the add in the bottom navigation, is that the same? Yeah, they both are the same. Okay. Okay. So next, Nilesh, I would like you to explain me the rest of the screens from your wireframes, starting from account. Okay, I'll stop myself. Yes. Hello, my screen is visible. No, it's not yet visible. Yes, my screen is visible now. Yes. I have to explain the budget, add goals, side budget, and income. No, from my thing. So show me the Huh? accounts screen. Your voice is clear. Account screen. Hello, Sorry. hello. Your what? Yeah, I'm saying show me the account screen. Accounts. My account. Am I audible? Accounts. Yeah. Yes, account screen. Yeah. So, prototype it Huh? and show it. Your voice is not coming clear. Click on. Hello. Is everyone else can hear me or no one can hear? No, you're audible. Okay, my turn. Some issue at your end. Okay, I'm checking. But you are what you are telling? क्या कह रहे हो? I'm saying present the account screen. Account screen is this. Yeah. Yes. हाँ. Account में Yeah. So click on prototype and show it to me, like how Jigar was presented, हाँ. right? The In the first account मतलब account में क्लिक करो तो आपको नॉर्मली आपको दिखाएंगे कि आपने एंट्री क्या डाला और क्या कॉन्सेप्ट कैटेगरीज में डाला है. मैंने ये एक्सपेंस होगा तो आपको देखो एक्सपेंस मैंने कलर वाइज किया हुआ है. वो रेड में दिखेगा कि ये एक्सपेंस है और ग्रीन में आपको इनकम दिखेगा कि आपका इनकम कैसे है. और फिर इसको मतलब इसमें ये भी दिखेगा कि ऊपर एक्सपेंस और इनकम लिखा हुआ है और इसमें बैलेंस कितना है. तो आपको ऊपर भी टोटल अमाउंट आज का कितना एक्सपेंस हुआ है और कितना वो हुआ वो इधर आ जाएगा पूरा ऊपर महीने का. ये एक महीने का पूरा एक्सपेंस कितना हुआ वो आ जाएगा इधर ऊपर एक्सपेंस लिखा है ना उस पे इधर. और फिर इनकम मैंने अभी ऐड नहीं किया, इसमें इनकम ऐड कर दिया था तो इधर 1,000 रुपीज लिखा आना चाहिए इनकम में और इसका फिर बैलेंस भी चेंज हो जाएगा उसमें. So एक अभी और ये और इसके डेट पर अभी ठीक है, अगर सिर्फ ये ऐसे आ रहे हैं एक्सपेंस के तो ठीक है, लेकिन व्हाट इफ ये यहाँ पर ऐसे 10-15 हाँ ये एक महीने का ऊपर लिखा हुआ नहीं ये पूरा एक सितंबर मतलब मंथ है ना वो मंथ का एक्सपेंस आएगा और आपको डेट वाइज एक्सपेंस चाहिए तो इधर ऊपर इधर लिखा हुआ ना उसमें एक्सपेंस आ जाएगा. करेक्ट. तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये तो यहाँ पर 2 सिर्फ शॉपिंग और फूड हाँ. बताया है, लेकिन एक ही दिन में 15 ट्रांजैक्शन है तो ये स्क्रॉल कितना बड़ा हो जाएगा पूरे महीने के, मतलब 30 दिन के मुझे कितना सारा स्क्रॉल मतलब आपको पहले तो वो थोड़े एक हफ्ते का ही दिखाएगा इसमें आपको, मतलब तब भी एक में ज्यादा एंट्री हो जाएगा तो आपका डेज वाइज ही दिखाएगा. तभी कम एंट्री है तो वो 2 दिन का दिखाएगा. एक बार वो खाली फ्रेम में आने की बात है फिर वो बाद में वो
नॉर्मली हो जाएगा, तभी मेनली वीक वाइज दिखाएगा आपको पूरा एंट्री। नहीं, ठीक है। सो जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब डेवलपर इसको कोड हाँ करेगा तब अपने आप ही उसकी व्यूज चेंज नहीं होंगे। नहीं, हाँ ठीक है, व्यू हमेशा एक ही होता है, और इससे तो व्यू इस तरीके से किया जाता है सो दैट इट अकोमोडेट्स 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, सब उसमें अकोमोडेट हाँ होना चाहिए। हाँ राइट, अभी ये सिनेरियो इसमें ये ठीक लग रहा है, लेकिन जब ये एक्चुअल इम्प्लीमेंट होगा इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, हाँ क्योंकि एक स्क्रीन पे इतना सारा डेटा आएगा, इतना सारा डेटा आएगा विच वुड बी डिफिकल्ट एवरी टाइम टू लोड। हम्म, हाँ गेटिंग माय पॉइंट? अभी ऊपर जो ये कैलेंडर दिया है वो क्या है, और ये सितंबर दिया है ये वो क्या है? इधर कैलेंडर दिया है, वो आपको पूरा ऐसे इधर पूरा एक डेट आ जाएगा, मतलब इधर इस पे क्लिक करोगे ना आप, आपको मंथ ये ईयर का आएगा, और ये कैलेंडर में करोगे ना तो पूरा आपको मंथ डेट कौन सा स्पेसिफिक डेट में करना है, और कभी आपको एडिट भी करना है तो ना, कोई पुराना डेट पे मैंने मतलब मैंने 2 तारीख को अभी किया था एक्सपेंड, तभी मैंने एंट्री करने लिया और 3 तारीख हो गई, तो इधर जाके मैं डेट चेंज करके मैं उस पर एंट्री वापस कर सकता हूँ। इधर खाली पर ये ये मंथ, एंट्री की स्क्रीन, ये खाली मंथ के लिए है पूरा, और ये पूरा ना ऐसे कैलेंडर आ जाएगा पूरा ओपन, तो उसमें और उसमें उसमें डेट लिखे होंगे, उसमें ना आप क्लिक करोगे ना, वो दिन में आप ऐड कर सकते हो कि एंट्री आपका मिस हो गया है तो। पर ये स्क्रीन इलेक्ट डेटा एंट्री की है ही नहीं। व्हाई आर वी क्लबिंग द अकाउंट स्क्रीन एंड द डेटा एंट्री स्क्रीन? या सेकेंडली, रिडंडेंट डेटा है, ऑलरेडी 23 सितंबर लिखा हुआ है, वही सेम चीज मुझे कैलेंडर में भी दिखेगी। सो व्हाई टू थिंग्स फॉर वन पर्पस? ये वाला ये है ना, इसमें खाली मंथ्स दिखेगा आपको, कि मंथ वाइज देखना रहता है अब ना, मैं वो, और ये कैलेंडर रहेगा, वो कैलेंडर में आपका ऐसा रहता है ना कि कभी एंट्री रह गई और कोई आगे के एंट्री का पता है आपको एक्सपेंस होना है, तो उसमें क्लिक करके आप एंट्री डाल सकते हो पूरा कैलेंडर में। हाँ, सो यहाँ पर एक बेसिक कंसिस्टेंसी का डिफरेंस है, क्योंकि स्क्रीन ऐड की नहीं है, तो किसी भी यूजर को कभी भी नहीं समझेगा कि वो जो कैलेंडर है वहां जाके मैं क्या करूँ। सो कैलेंडर पे जाके वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इसको फिल्टर कर सकता हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक मंथ का, स्पेसिफिक डेट का मैं डेटा हाँ देख उसमें वो सकता भी हूँ। देख सकते हैं, किसको भी उसमें भी समझ, वो पूरा देख सकते हैं डेटा भी, ऐसे मतलब आपने सेकंड पे क्लिक किया, मतलब ये सितंबर के मैंने डेट पे क्लिक किया ना, तो पूरा मेरे को वो मंथ वो डेट का पूरा एक्सपेंस मतलब उसमें ऑप्शन रहेगा एक्सपेंस भी देखने के, वो पर अभी 2 मिनट पहले यू जस्ट सेड कि वहां पर से मैं एंट्री कर सकता हूँ। हाँ मतलब एंट्री और दोनों मतलब वो उसका फ्रेमवर्क जो बना है ना, नहीं, सब चीज ऐसे नहीं हो सकती। सी, हर चीज की स्क्रीन होती है, हाँ हर चीज का एक फ्लो होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा जो हमारे दिमाग में है सब कुछ वैसे ही स्क्रीन पे हो जरूरी नहीं है, यू हैव टू थिंक इट फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। अभी एज ए यूजर इफ आई सी दिस स्क्रीन, हाँ ठीक है, मेरे लिए ठीक है, वो इनकम एक्सपेंस वाला पार्ट ठीक हाँ है, अच्छा है। वो 3 सितंबर, 2 सितंबर अगेन, वहां पर जब मेरे पास बहुत सारा डेटा होगा तो उस स्क्रोल पे कितना सारा डेटा आएगा। थर्ड चीज, कि वो जो एक्सपेंस 2000 इनकम 0, एक्सपेंस 500 इनकम 1000, तो वही सेम चीज अगर मुझे एक एक इंडिविजुअल डेट की अगर मुझे दिखाओगे, इट इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर द यूजर, क्योंकि जब वो रिपोर्ट्स में जाएगा या फिर उसको खुद को जब फिल्टर करना है तो तब जाके वो फिल्टर करके एडिशनल डेटा देख सकता है। दैट शुड बी द हाँ अप्रोच। अभी ये स्क्रीन पे कितने सारे एलिमेंट्स है, कितने सारे एलिमेंट्स, डेट, इनकम, एक्सपेंस, वापस से डेट, इनकम, एक्सपेंस, शॉपिंग, मतलब हर एक डेटा आइटम, तो स्क्रीन कितनी क्लटर लग रही है। अब ये जब हम पहले 10 साल पहले जब कोई हाँ ऐप बनाते थे ना, ये तब का अप्रोच है, वेर यू वांट एवरीथिंग ऑन द सेम स्क्रीन। अब वैसा अप्रोच नहीं कोई यूज करता है, और ना ही यूजर इसको क्या बोलते हैं ना ज्यादा वैल्यू करता है, क्योंकि सब यूजर को आजकल मिनिमल डिजाइन
एट द सेम टाइम जितना मुझे डेटा चाहिए मैं खुद देख लूंगा. यू डोंट हैव टू bombard data on me. Gone are those days. ठीक है. And for everyone else also, and also for Nilesh, क्लाइंट को कन्विंस करना है, बट कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए, टेक्निकल रीजन होना चाहिए. यहाँ पे टेक्निकलिटी में मिस्टेक थी, दूसरा कोई वैलिडिटी नहीं थी. हम बैठे बैठे यहाँ पर आंसर बना रहे थे कि हाँ वहां से वो डेटा दिखेगा भी, वहां से वो डेटा ऐड भी कर सकता है. ऐड की तो स्क्रीन भी नहीं है. रिडंडेंट डेटा है, उसका कोई आंसर नहीं है. सो अगर आपके पास आंसर नहीं है, एक्सेप्ट दैट इट्स योर मिस्टेक, but don't fight over false screens. Yeah, don't fight for false screens. Just one doubt, हर्ष. वो जो अकाउंट्स का जो उन्होंने दिखाया राजेश भाई ने, सो इवन इन द मनी मैनेजर को ऐसी डेट वाली ही इतना लंबा लिस्ट आता है, यू हैव टू स्क्रॉल इट इफ यू वांट टू. तो मैं समझा नहीं रेडिडेंट डेटा का वो इशू. आप क्या क्या? ये कह रहा हूँ कि जो नीलेश भाई ने जो 2 सितंबर 3 सितंबर का जो डेट के हिसाब से बताया है, हाँ सो इवन इन द मनी मैनेजर भी वो वैसे ही आता है. सो जो बोल रहे हो रेडिडेंट डेटा, तो वो इशू मैं समझा नहीं. रिडंडेंट डेटा जैसे ऊपर कैलेंडर हो गया, ठीक है. यूजर जब जब देखता है ना इसको, तो अब देखो उसको कितने सारे इनकम एक्सपेंस दिख रहे हैं एक साथ. गेटिंग माय पॉइंट. दूसरा, लेफ्ट साइड पे 2023 सितंबर और ऊपर कैलेंडर, दोनों सेम ही चीज करेंगे. तो दैट इज द रिडंडेंट डेटा. एक ही ओके. फिल्टर से चीज हो सकती है वो कैलेंडर से, तो यहाँ पर वो देने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर सिर्फ रीड अलग बात थी. तो यहाँ पे अगर मेरे को, अगर मीन्स इन्होंने जो कैलेंडर का, मीन्स ये जो फिल्टर का जिन्होंने जो कंसेप्ट बनाया है कि अगर मैं चाहता हूँ कि वो डेली हो, वीकली हो, मंथली हो और कस्टम हो, तो उनको ये ड्रॉप देना चाहिए था कि कैलेंडर पे ही देना चाहिए था. नहीं. सो पहली बात तो ये है, उन्होंने सिर्फ एक ही डेटा सेट को ध्यान में रख के बनाया, विच इज द डेट. लेकिन अगर मुझे सिर्फ इनकम देखना है, उसका फिल्टर नहीं है. मुझे सिर्फ एक्सपेंस देखना है, मुझे उसका कोई फिल्टर नहीं है. राइट. जैसे हमने क्या बोलते हैं, इसमें बनाया भी था फिल्टर, राइट, कि जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस थे. मुझे कैटेगरी वाइज देखना है, तो उसका ऑप्शन नहीं है कि मैंने सिर्फ फूड में कितना स्पेंड किया है, सिर्फ शॉपिंग में कितना स्पेंड किया है. करेक्ट. तो ऑल दैट पार्ट इज मिसिंग. सो वो सब अगर स्कोप डॉक्यूमेंट में है, सो इट इज आवर ड्यूटी कि हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करें. वो फूड और उसका मैंने ऐसे फ्रेम बनाया है इधर मैंने, कि मतलब इधर मतलब ऐसा मैंने अभी करना है, तभी वो पूरा चार्ट बनाया हुआ मैंने, कॉन्सेप्ट रखा है मैंने उसका. नहीं, चार्ट नहीं देखना है, ये अलग चीज है. रिपोर्ट इज अ सेपरेट थिंग. मतलब मुझे सिर्फ देखना है कि मैंने 6 महीने में फूड कितनी बार ऑर्डर किया है, या फूड में कितना एक्सपेंस किया है. तो मैं यहाँ डेट रेंज में जाके 6 महीना सिलेक्ट करूंगा, कैटेगरी में सिलेक्ट करूंगा फूड. मुझे सिर्फ 6 महीने की फूड की कैटेगरी आएगी. That's it. सो इवन द रिपोर्ट इज द सेम ना. रिपोर्ट में चार्ट्स है, उसमें आपको एनालिटिक्स वगैरह मिल रहा है. ठीक है. उसमें अगर आपको एडिशनल सेम चीज दिखानी है तो दिखा सकते हैं. तो रिपोर्ट का यूजुअली मतलब क्या होता है कि कुछ एनालिटिक डेटा मिलता है आपको, नॉट द लिस्टिंग डेटा. तो देयर इज अ डिफरेंस इन लिस्टिंग एंड एनालिटिक्स. सो मीन यू मीन टू से कि लिस्टिंग में हम सिर्फ एक ही कैटेगरी का डेटा देखते हैं, और रिपोर्ट्स में हम मल्टीपल कैटेगरीज का देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं. करेक्ट. एग्जैक्टली. उसमें ओके. ओवरलैपिंग डेटा होगा, परसेंटेज वाइज डेटा होगा, वो तो आपको लिस्ट में नहीं मिलेगा ना. ओके. या गॉट इट. या. ठीक है. सो हेजल ठक्कर, प्रेजेंट योर अकाउंट का स्क्रीन. बट गुड गुड अप्रोच नीलेश. जो थॉट प्रोसेस जो ठीक है ट्राई किया है, थोड़ा अलग ट्राई किया है, गैप्स है, बट आई अप्रिशिएट कि ट्राई किया है. हेजल. हेजल.
ठीक है, ओमकार. ओमकार देशमुख. Hello, hello. Please present your screen and let's go through your account testing. एक second. Is it visible to Yes, everyone? yes, it's visible. ये ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो शायद लाइन में नहीं आएगा बिकॉज Sorry. आपको है ना एग्जैक्ट लाइन में नहीं दिखेगा बिकॉज इतने सारे स्क्रीन है तो Present the account screen. Let's go to the account screen directly. from the entry part. Right. That's the account listing. This one is the account like transaction part, which will be shown once you have done the transaction, all the transactions, and here we have specified a paid, so that we'll get to know that we have paid or we have received. If there is no thing is written, so we can consider it as a received amount. This- Okay, but अगर ये parent screen है तो ऊपर back का button क्यों है? Pardon? अगर ये parent screen है तो इसमें back का button क्यों है? नहीं मेरा mistake है. Next. Just a second, I'll write it down. Next. Next thing हो रहा है. Next thing. एक सेकंड. नेक्स्ट स्क्रीन ही नहीं हो रहा. एक सेकंड. मैन्युअली प्रेजेंट. ये वर्जन था फर्स्ट ऑफ ऑल तो, बिकॉज हम लोग ने क्लास में 3 वर्जन देखे थे. तो ये वर्जन 1 था, ये वर्जन 2 है, उसमें भी सेम मिस्टेक है अबाउट दैट पैक बटन. So while presenting to your client, always say, okay, we have created three options for this. Let me take you through one by one. Now Okay. explain what's the difference. For me as a client, it's all the same. हाँ. What is the maximum number of versions we must include to present it to client? One. तो But हो गया ना हर्ष, सर जी. Sorry. वो तो फाइन मतलब वो तो फिर फाइनल वर्जन जैसा हो गया ना. Right. As a UX designer, always present one option, stating that as an expert, this is what I feel is more appropriate, looking at the users,
and keeping the business in mind. If you yourself are giving option to the client, that means it states you are not 100% sure as to which option is appropriate for the client, for the system, for the app, for the website. So always give one option and then let client give the feedback. And I feel that it needs something more. Let client speak that I feel that it can be done a little more better, right? That is when you work on the second option. But the first option should always be the one that you feel as a UX designer is perfectly fine for the clients and the users. And if you are means as a beginner designer, if you are means like 50-50 that ये भी अच्छा लग रहा है ये भी अच्छा लग रहा है, so वो केस में भी हमें एक ही दिखाना चाहिए. Yes. So Okay. that when client tells you that I need an option, you have that option ready. Okay. हाँ. बट हर्ष भाई अब ये वर्जन्स तो हम लोग ने लाइक बनाया था कि ऐसे भी वर्जन्स हो सकते हैं. हाँ, so explain तो me. इसमें एक्सप्लेन करना मतलब क्या ही आया मतलब बिकॉज ये There तो are- बस हमने बनाया है ना. नहीं नहीं नहीं, हर चीज का रीजन है, तीनों ऑप्शन का रीजन है. That why 3 options? Why not 1 option? बिकॉज तीनों ऑप्शंस में एक सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रेजेंट है. नहीं, that's the wrong approach. ठीक है, let me explain it to you. No worries. Let me share my screen. एक सेकंड में क्लोज कर लूं. Correct. So we have designed 3 options, 3 different layout options, not major differences, but yes, there are certain differences that we felt. So we have designed 3 options for this particular screen, the account screen. So in this option, if you see the listing is in card. So maybe in future when we have the transaction ID, right? If we integrate the payment here itself on the app. So we have added the we have added room for that particular thing also, where you can have the transaction ID here itself. And a small tag which states whether it is paid or not, or whether it is what we say received. Okay. We have also used some icons, to break the monotony of the screen because it already has a lot of data. And right now we are seeing today's data, which is 3rd September. If we filter out or if we change the date, that particular date or day-wise data will be seen here. This is the first option. In the second option, we have just used the space a little more. So if you see here, right, in the boxes, the data is little close to each other. So it looks a little cluttered with a lot of lines and boxes. So here we have, just cleaned it a little bit, where we have still kept the data set, the icons and everything the same. But yeah, we have occupied the space a little more. Whereas in the third option, which we really recommend is the appropriate one for us, is just the icons, the category and the amount. And we are trying to tell the user whether it is paid or received using a subtle color in the background. So that way it looks cleaner, it looks young, and at the same time it is very approachable to all the target audiences that we are catering to. Right? And if there is an active filter, we will show it this one with a badge on the right of it. So if there are multiple dates also, we will be able to see that in this particular manner, one below the other. So if I change the date, right? So this is how I see the date wise. So Okay. so We are saying that in this filter there will be no date filter. Means date filter is separate and the category and whatever the other filters we have, that is separate. I come to that point separately. Right now, what I was trying to explain is this is how you explain to client
why there are three different options with technical reasons and not just for the sake of saying it that we liked it so we created it. Getting my point? Omkar. लेकिन बट हर्ष भाई मतलब वो जो फर्स्ट जो दो ऑप्शंस थे उसमें लाइक एक बॉक्स था और एक स्पेस का यूज किया हुआ था, हाँ तो देयर माइट बी चांस ना कि क्लाइंट बोलेगा फर्क तो नहीं है इतना कुछ, हाँ, बिकॉज क्लाइंट बोलेगा ही बोलेगा, ऑफ कोर्स बोलेगा वो। और इसलिए मैंने वहां पर पॉइंट आउट किया ना कि ये दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि इफ यू लुक एट द स्क्रीन दिस लुक्स क्लटर्ड राइट नाउ, whereas if you see this approach it is much more cleaner. That's the only difference. But since we have cards everywhere else, we thought of giving this option a try. That's it. So always portray your option to the client that this is the option that I like, but since you ask for more options, that is why we have created this. But we are recommending this option as per our expertise. This should be the approach. Is it clear? बट ये एक टू बी अगर यही सेम ऐप रहता लाइक यही सेम, तो ऐसा कोई लाइक ऑप्शन से कुछ उन लोगों के बिजनेस को तो इफेक्ट तो नहीं होएगा, तो हम लोग जनरली होगा. Again, as a UX designer, you don't talk only about business. You talk about the users. अब तो नीलेश ने जो अप्रोच बनाया था, वो अप्रोच में इट वाज अ हार्डकोर फाइनेंस गाय जिसको इतना सारा डेटा देखने की आदत है, उसको स्क्रीन अच्छी लग जाएगी. बिजनेस गाइज विल लाइक दैट स्क्रीन, बट अ यूजर वोंट लाइक दैट स्क्रीन. So you have to think from a user's perspective, not from business perspective only. Okay. And when you speak to the client, you have to keep that confidence. Everyone. कि मैंने जो बनाया है मुझे मालूम है मैंने क्यों बनाया है, and this is the reason why I have designed it. If you are of the same opinion के ठीक है ऐसे क्या ही फर्क पड़ेगा, अरे इतना सही तो स्पेस है. अगर आप एक ब्लू कलर को रेड भी करते हो ना, उसके पीछे भी आपको एक रीजन होना चाहिए. सिंपल है सर. अगर आप वो नहीं देते हो तो फिर अगेन यू आर डूइंग अ डीटीपी जॉब. जो क्लाइंट बोलेगा यू विल एंड अप डूइंग दैट. ठीक है. राइट. There was one more point. हाँ, ये इसका पॉइंट था रियान का. सो अब इसमें यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ ही ऑप्शन दिया है. सो देयर आर टू डिफरेंट ऑप्शंस आउट हियर. ठीक है. एक है जो हम यहाँ दे रहे हैं क्विक डेट्स, which is today, yesterday, this week, that's it. And सिंगल अगर मुझे डेट सिलेक्ट करनी है तो वन सिंगल डेट. ठीक है, वो यहाँ पर दे रहे हैं. लेकिन इन द फिल्टर वी आर गिविंग लॉट्स ऑफ डिटेल्स. स्टेटस के सिर्फ इनकम एक्सपेंस चाहिए, कैटेगरीज क्या है, डेट रेंज दे रहे हैं हम जो वहां पर नहीं है, एंड सॉर्टिंग ऑप्शन भी दे रहे हैं, सॉर्ट बाय हाईएस्ट टू लोएस्ट. सो मैं डेट रेंज अगर सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पर विजिबल होगी कि ये जो डेटा दिख रहा है मुझे वो इस डेट का है. क्योंकि अगर मैं यहाँ पर टुडे या कोई एक स्पेसिफिक डेट लिखूंगा तो यूजर विल गेट कंफ्यूज. So that is why you smartly use that date range out here. और अगर ये मैं कैलेंडर पे समझो मैंने मंथली डाला तो फिल्टर में भी वो काउंट होगा ना? नहीं, वो सिर्फ यहीं पर चेंज होगा. फिल्टर जब आप ये ओपन करके यहाँ पर कुछ फिल्टर डालोगे तो फिल्टर में काउंट होगा वो. नहीं, डेट रेंज मीन्स अभी मैं थोड़ा सा मीन्स डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी सोच रहा हूँ. हाँ, डेवलपमेंट में आपके लिए फिल्टर ही है. ओके. डेवलपमेंट में आपके लिए फिल्टर ही है. इट्स अ डेट फिल्टर ओनली फॉर यू इन द डेवलपमेंट. ओके, ठीक है. Okay. So, but I went through the wireframes. बहुत अच्छा एनहांस किया है और उसको फाइन ट्यून करो आई वुड से. अच्छा, अब जस्ट रेज योर हैंड्स क्विकली. ये जो चैट में ऑप्शन है यहाँ पर रेज हैंड का, कि किसने टास्क मैनेजर की वायरफ्रेम्स
बनाई है. Or rather, let me do this. I have created another poll. Please reply to that poll. Everyone quickly reply to the poll. Do you have any question, Parvat Patel? I think Niti, right? It's Bhumika or Niti? Sorry, I did not. It's Nidhi, sir. Niti. Do you have any doubt? No, no. Yeah, Priya. So my doubt is that कि मीन्स हमने जो ऐप बनाया टास्क इसका फाइनेंस का सो मीन्स यहाँ पे जो नीचे जो हमने फील्ड्स दिए अकाउंट्स की एड एंट्री की स्टैट्स की सो मीन्स ये एक बहुत एक बेसिक ऐप था बट Yes. आपने जो मीन्स आप जो एक एग्जांपल दे रहे थे कि आपने वो शिपमेंट का बनाया जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था और शिपमेंट मीन्स ऐसा कुछ था सो अगर अपन उतना कुछ कॉम्प्लेक्स ऐप बनाते हैं तो हाउ यू आइडेंटिफाई कि सबसे पहले स्क्रीन पे वो नीचे जो 4-5 आइकन्स होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए So वो डिपेंड करता है द पर्पस ऑफ बिजनेस. अगेन अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी जो ऐप है, सो ऐप में सारे फीचर्स नहीं होते हैं. कुछ फीचर्स आपके वेब वेब ऐप पे ही होते हैं. मोबाइल ऐप पे सिर्फ ट्रैकिंग वाले फीचर्स होंगे. ठीक है, तो इसलिए अगर आप कोई पेमेंट गेटवे भी देखोगे, सो पेमेंट गेटवे की ऐप एक लिमिटेड फीचर वाली होगी, वेरेज उसका जो वेब ऐप है वो बहुत एक्सटेंसिव फीचर वाला होगा. और दूसरी पॉइंट आपका जो क्वेश्चन था कि हाउ डू यू डिसाइड, सो यू ऑलवेज डिसाइड बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द ऐप कि ऐप का अल्टीमेट पर्पस क्या है. जैसे हमारे ये ऐप में एंट्री ऐड करना है, अकाउंट्स मैनेज करना है और रिपोर्ट्स देखना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी. वैसे ही आपका जो भी स्कोप होगा उसमें स्कोप में कौन सा हाईएस्ट पर्पस वाला ऐप काम है, ऑब्जेक्टिव है दैट यू वांट द यूजर्स टू डू, आप उसको नीचे प्लेस करोगे. या वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज करने वाले हैं वो आप उसको नीचे प्लेस करोगे. दैट इज वेयर यू हैव टू टेक दैट कॉल कि व्हाट फीचर्स यूजर्स विल फ्रीक्वेंटली यूज एंड वी एज अ बिजनेस ओनर वांट देम टू डू. So, for an example, if I have an style guide app जिसमें कोई लड़का अपना हेयर स्टाइल अपना ड्रेसिंग स्टाइल शू स्टाइल और एसेसरी क्या बॉडी के हिसाब से पहनना चाहिए सो इसमें मीन्स मैं एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव मैं तो चाहता हूँ कि वो हेयर स्टाइल भी देखे ड्रेसिंग स्टाइल भी देखे शूज भी देखे सब देखे तो वो तो फिर क्लटर हो जाएगा ना हाँ, लेकिन आप नीचे सब कुछ नहीं डालोगे, फिर आप एक ही ऑप्शन दोगे नीचे, स्टाइल योरसेल्फ या फिर कैटेगरीज. जब वो कैटेगरी पे क्लिक करेगा देन ही विल सिलेक्ट कि उसको कौन सी कैटेगरी का स्टाइल करना है, उसको हेयर करना है, शूज करना है या व्हाटएवर उसी कैटेगरी. सो देन यू हैव टू कीप द नेस्टेड कैटेगरीज. तो मतलब वो स्टाइल योरसेल्फ पे क्लिक करेगा कैटेगरीज ओपन होगी उसमें कैटेगरी सिलेक्ट करेगा और फिर उसको वो मीन्स दिखाई देगा एग्जैक्टली. और अगर आपको उसको कुछ अपफ्रंट बताना ही है तो आप आपके डैशबोर्ड का यूज कर सकते हो, जहां पर आप कुछ जो हाईएस्ट यूज कैटेगरी होगी, राइट, जैसे हेयर स्टाइलिस्ट या शू स्टाइलिस्ट, तो वो आप अपफ्रंट डैशबोर्ड में बता सकते हो. अच्छा Yes. ओके गो अट इट थैंक यू ठीक है.
सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सैटरडे को, ठीक है। विल स्टार्ट विद द यूआई। अब यूआई का एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ आज कि यूआई डिजाइन में हम क्या क्या चीज करेंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टार्ट विद द ब्रांडिंग कलर पैलेट। सो क्लाइंट का जो भी लोगो होगा, जो भी ब्रांड गाइडलाइंस होगी, यू हैव टू फॉलो दैट। अगर नहीं है सो ऑफ कोर्स यू चेक दियर लोगो, लोगो में कौन से कलर्स है, उसके बेसिस पे यू सिलेक्ट द कलर्स। थर्ड सेकंड थिंग इज द फॉन्ट्स। अगेन उसकी अगर ब्रांड गाइडलाइंस में अगर फॉन्ट्स है, then you select the same fonts, else you select the fonts which are appropriate based on their business. Third is the grade structure. So there are multiple grade structure. एक होता है कि 12 column grid होती है. So if anyone asks you कि कितने column की grid होती है, so always remember there are 12 column grid. ठीक है। उसमें कंटेनर की साइज अलग अलग होती है। We'll get to that deep dive when we move to that particular stage. So grid structure होता है। There is a thing called as 8-point grid, which is used with our 12 column grid. ठीक है। So 8-point जो grid है वो spacing के लिए ज्यादा यूज की जाती है, which is the padding, the margin, line heights। जैसे अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या फिर टाइटल लिख रहे हैं, ठीक है। So टाइटल एंड पैराग्राफ की जो बीच की लाइन की जो स्पेस होती है वो भी डिफाइन होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं लाइन हाइट। फिर अगर जो हम एक वर्ड लिख रहे हैं तो उसके लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है दैट इज नोन एज कर्निंग, ठीक है, या उसको हम लेटर स्पेसिंग भी बोलते हैं, लेटर स्पेसिंग या फिर कर्निंग, ठीक है। दैट यू हैव टू टेक केयर। उसके बाद वी मूव अहेड कि हाउ टू रेफरेंस आउट द डिजाइन्स। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वायरफ्रेम मिली और आपने तुरंत डिजाइन चालू कर दी। नो, दैट्स अ वेरी बैड अप्रोच, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा नहीं है कि 50 डिजाइनें चल रही है और आप उसको बना दोगे। तो ऑलवेज स्पेंड टाइम इन रेफरेंसिंग, ठीक है। जितना रेफरेंसिंग करोगे उतना बेटर होगा आप सबके लिए डिजाइन बनाना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज यूज ऑफ इलस्ट्रेशन इमेजेस एंड विथ अप्रोप्रिएट कलर्स, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक इमेज यूज कर रहे हो, दूसरी जगह इलस्ट्रेशन यूज करो, तीसरी जगह आइकन यूज करो। So sixth point is the consistency. Always use components. Always create components. मैं नहीं बोल रहा हूँ फिग्मा में component create करके तुरंत बना। Start में भले उसको copy paste कर लो, but keep the components the same. अगर एक बटन यूज कर रहे हो, make sure that the button is the same. There are different types of button. तो ऐसा नहीं होगा कि जो फॉर्म में बटन है वही फिल्टर में लगेगा और जो फॉर्म में टेक्स्ट फील्ड है वही आपके फिल्टर में लगेगी। उसमें चेंजेस होते हैं, उसको डिफरेंट हम वेरिएशंस बनाते हैं। सो यू ऑलवेज क्रिएट अ सेवेंथ थिंग व्हिच इज द डिजाइन सिस्टम। डिजाइन सिस्टम जब आप डेवलपर को देते हो तो वो डिजाइन सिस्टम बना के यूज करके वो कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी फॉर्म, कोई भी चीजें फिर रीयूज बना सकता है, ठीक है। इसलिए हम जो ये एप्स वगैरह देखते हैं इतना फटाफट अपडेट होते हैं, उसका रीजन यही है because their design system is updated, ठीक है। So there are many things that we have to cover in the UI design. हमको बनाने भी है, सिर्फ theoretical नहीं करना है। So make sure that अब से कोई भी लेक्चर मिस ना करो। Don't rely on the recording part, क्योंकि रिकॉर्डिंग से समझ तो जाओगे ठीक है, लेकिन you won't be able to clear your doubts. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो लाइव क्लियर नहीं कर पाओगे। So I would recommend spend time, थोड़ा टाइम टू टाइम लेक्चर्स में आओ, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे संडे होगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑन यूआई डिजाइन। एंड जो भी वायरफ्रेम बना रहे कंटिन्यू विद द वायरफ्रेम फिग्मा, रोज की रोज प्रैक्टिस करो, भले आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा प्रैक्टिस फिग्मा। जब तक फिग्मा प्रैक्टिस नहीं करोगे यूआई डिजाइन बहुत डिफिकल्ट होगा करना। अभी भी 3 दिन का टाइम है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तो आ ही गया, क्या 2 दिन का और टाइम है। जितना फिग्मा प्रैक्टिस कर सकते हो करो, बिकॉज यूआई डिजाइन में यू हैव टू बी वेरी वेरी शार्प इन फिग्मा, ठीक है। किसी को कोई डाउट्स हो फील फ्री टू पिंग मी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इट वाज